Hello students, in this lecture we are going to discuss some of the challenging problem in permutation and combinations which are geometrical based. So without any further ado, let's get started. In the first one where n points are given, none of which are collinear, I would advise each one of you there कि जब भी किसी क्वेश्चन में that type of word or that type of sentence is given, none of them are constant. आप सारे ही points को please consider करें एक circular track पर. Okay, now let's try to solve first one where number of straight line we need to find by joining this point. If n number of points are there, then how many points are required for a straight line? Your answer should be 2. If we have 2 points, then everyone of us know that by joining any 2 point will end up getting a straight line. So out of n, choosing any 2 point will give us a straight line. So that will be the answer of A. Now what about the triangle? Triangle के लिए क्या हो जाएगा? Instead of 2, we need 3 point. So the moment you pick any 3 point, you will have a triangle. Am I right? So picking a 3 point is surety that you will have a triangle. So NC3 times 1, that times 1 denote one number of triangle which you need to expect if you are selecting any 3 point. Now have a look on the third one, number of diagonals in a polygon. आपने क्या किया, ये जो n number of points यहाँ पे given थे, इसे consider करें एक closed n sided polygon जहाँ पे a1 a2 up till an are supposed to be its vertices. Diagonals is what we are looking for. So for that problem, let me draw a quadrilateral quickly so that you will have a great level of understanding. Say this quadrilateral whose vertices are A, B, C, D. So if your answer is NC2, then please be aware. NC2 में तो क्या आपने किया है? NC2 का मतलब है 4C2 right there. Number of sides, number of vertices are 4 actually. तो 4C2 का मतलब क्या है? आउट ऑफ दिस 4 अगर आपने किन्हीं भी 2 पॉइंट को सेलेक्ट किया है, देन ईच सिलेक्शन विल गिव यू अ लाइन सेगमेंट. एम आई राइट? तो उस इस लाइन सेगमेंट में तो ये ए बी साइड, बी सी साइड, सी डी साइड और डी ए साइड भी इंक्लूड हो जाएगी अपार्ट फ्रॉम योर डायगोनल विच आर ओनली टू ए सी एंड बी डी, which are only two AC and BD. So this 4C2 will give you not only your diagonal but also your number of sides of closed polygon. So this NC2 is actually total number of sides of a polygon plus number of diagonals. तो अगर आपको diagonals पता करने हैं तो ensure आपको number of sides पता होनी चाहिए. So for four-sided polygon, we have 4 sides, and obviously 4C2 minus 4 will give us total number of diagonals for this number of diagonals for quadrilateral. So अगर n-sided polygon की बात करें, then what should be your answer? Our answer will be NC2 minus n, where this n minus जो हमने किया है, it denotes number of sides. Number of sides. Now let's move on the next one. In this one, 10 points are given where 3 being collinear except 4. इसका मतलब क्या है? 4 points as you can see on the screen are collinear except remaining 6. So remaining 6 को मैंने कहा था पहले भी, आप क्या करें, एक सर्कुलर आर्क बनाएं, वहां पे मेंशन करें to avoid any calamity. Now what we need to find? We need to find number of lines. So there are two method which I want to convey there. Method number 1 क्या है? आपने blindly 2 points को select कर लिया है out of 10 10C2. But this 10C2 will not give you total number of lines. क्यों? क्योंकि इन 10C2 में 4 points आपके A, B, C, D भी है, जिनमें से किन्हीं भी 2 point को select करने पे, लेट अस से आप सेलेक्ट कर रहे हैं ए बी को, आप सेलेक्ट कर रहे हैं ए सी, ए डी, बी सी, बी डी और इवन सी डी, हर एक सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग हाउ मेनी लाइंस डू हैव? वी हैव ओनली अ लाइन. तो करना क्या होगा, इन कोलिनियर पॉइंट से के सिलेक्शन को आपको रिमूव करना होगा, वो सिलेक्शन जो कि आपने रिगार्डिंग कोलिनियर पॉइंट से किया है. बट अगेन दिस इज नॉट अवर आंसर. ऐसा क्यों? बिकॉज इन 4 कोलिनियर पॉइंट से स्टिल वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन. So further we need to add one. Further we need to add one. So this is method number 1. That type of rule is known as bijection. Second rule अगर आप से जानना चाहते हैं then please pay attention. आपको करना क्या होगा, यहाँ आपको फोकस करना होगा सारे ही नॉन कोलिनियर और कोलिनियर पॉइंट पर.
So now try to assimilate your thought how you can get a straight line. One, if you pick a point from non-collinear point, another from a collinear point. You may also get a straight line if you pick any 2 points from non-collinear points. And if you choose your collinear point, then still there is chances that you will get a straight line. Now, if you pick any point from non-collinear point out of 6, it is given by 9, 6 even. One collinear point out of 4, it is 4C1. So we'll get a straight line. We'll get a straight line. What about two non-collinear point? We don't have any problem. Just choose any 2 point out of 6 and each selection will ensure a straight line. What about two collinear point? Please directly write a 1 rather than 4C2 because collinear point है, the number of straight line be 1 he will. Now, what about the second one where number of triangle is what we are looking for? For that one, अगर आप बाइजेक्शन यहाँ पे अप्लाई करना चाहेंगे then directly write 10C3 which give you a selection of any 3 point out of 10 that ensure a triangle. But beware of points which are collinear. Collinear point है तो क्या करना पड़ेगा हमें उन collinear points में से जो कि 4 है we need to select any 3 and subtract it from the total number of cases because इनकी corresponding will not get any triangle. ठीक है, so यहाँ पे +1 करने की जरूरत नहीं है because if we are not getting any triangle then why would I add 1? Only this will be your answer. Now let's move on the next one. 6 vertices of a hexagon and consider its center. अगर center है तो क्या होगा? Before I start this question, मैं आपको बता देता हूँ कि center के जो opposite point होंगे वो centers के साथ collinear होंगे. So if I talk about point A, B, then obviously it will be collinear with center. If I talk about point C, D, it will be collinear with the center. And even if I talk about point E and F, it will be collinear with its center. Now, let me complete the question. How many of them are straight line? If a straight line is what I am looking for, हमें करना क्या है? अगर आप बाइजेक्शन रूल से जाना चाहते हैं, then how we can solve this question? बाइजेक्शन में आपको चेक करना होगा how many number of points are there. Since it is 7, तो क्या करें? Blindly choose any 2 out of 7. अभी ध्यान किसका रखना है हमें ख्याल रखना है कोलिनियर पॉइंट्स का यहाँ पे 3 अलग अलग कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं रिगार्डिंग कोलिनियर पॉइंट्स वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज ओ सेंटर इन बी another one is o center in c the next one is o center in f थोड़ा सेंटर को हमें सेंटर में लाने दें ओके नाउ 3 आर देयर जहां पे आपने क्या किया होगा कि अगर आपने गलती से इन 3 पॉइंट में से विच आर कोलिनियर इफ यू पिक एनी टू यू विल नॉट गेट एनी स्ट्रेट लाइन तो हमें करना क्या होगा 3 टाइम्स है ना 3 टाइम्स ऑफ 3C2 को हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा बिकॉज 3 कॉम्बिनेशंस आर देयर but again you need to add something and something which you have a straight line joining o center b C center D and E center F. So that means you further need to add a 3. Further you need to add a 3. So that will be your number of straight line which you can form. Now अगर triangle की बात करें then हमें क्या करना होगा regarding triangle आप बाइजेक्शन ही अगर यूज करना चाहते हैं then blindly choose any 3 point out of 7 which you can do which you can choose by 7C3 manner सीधे क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें उन 3 पॉइंट्स के सिलेक्शन को जो कि आपने कोलिनियरिटी से आपको मिले होंगे यानी कि whenever you pick one of these combination A center B C center D or even E center F you will not get any triangle so simply subtract 3 times C 3C3 that will be your answer. Now last one if we have two set of parallel lines 6 and another set of line which I have mentioned with the green ink there. Parallel lines when they intersect आपको बताना है number of parallelogram कितने होंगे. Before I start this question, please answer this thing carefully. Okay, how many lines are required to form a parallelogram? Every one of you know what is the property of a parallelogram. So each one of you say we need a pair of lines. Pair of lines that means we need total 4 number of lines. If we have 4 number of lines, that means result in formation of a parallelogram Now मैंने क्या करना है इन 6 lines को 1 2 3 4
5 एंड 6 लाइन को इंटरसेक्ट करवाना है रिमेनिंग 5 लाइन से. This is 1 2 3 4 and let us say 5. करना क्या है, हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन से 6 आउट ऑफ 2, सॉरी आपको 2 सेलेक्ट करना है, 2 आउट ऑफ 6 हमें सेलेक्ट करना है हॉरिजॉन्टल लाइंस को. एंड दैट ट्रांसवर्शियल लाइन जो कि 5 है, सेलेक्ट एनी 2 आउट ऑफ 5, सेलेक्ट 2 आउट ऑफ 5, 5C2 से. तो लेट अस से मैंने मेरा वन ऑफ द कॉम्बिनेशन ये रहा है, मैंने फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन और थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट किया है, और इन ट्रांसवर्शियल लाइन मैंने फर्स्ट को और लेट अस से मैंने सेकंड को सेलेक्ट किया है. देन द रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ अ पैरेललोग्राम. सो एक पैरेललोग्राम मुझे मिलेगा इस सिलेक्शन के करस्पॉन्डिंग. So that is your total number of parallelogram. Now last one and my favorite one. If we have a right straight line, 6 circles, then we need to find maximum number of their point of intersection. क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि इंटरसेक्शन केवल आपको स्ट्रेट लाइन और सर्कल का ही चाहिए. So you need to find every possibility. Possibilities of a line with a line, line with a circle, and a circle with a circle. So assuming we need to find point of intersection of two lines, then maximum case अगर हम देख रहे हैं, then maximum point of intersection regarding two straight line is 1. Wherever if a circle and a line is concerned, then obviously we'll get 2 point of intersection, and if 2 circles are there, then 2 point of intersection obviously will be there. Do not try to retort your circle to get the maximum point of intersection. Please circle को ellipse ना बना दें. आपको मैक्सिमम नंबर जरूर 2 से ज्यादा हो जाएंगे, बट दिस विल नॉट काउंट इन अ सर्कल. एलिप्स दिया हो, देन कंसीडर दिस थिंग डिफरेंटली. Anyway, how many point will be there if we are taking two straight line out of it? It will be one only. Now, if a circle and a line is there in picture, then we need to pick a straight line as well as a circle out of 8 and 6 respectively, and will end up getting 2 point of intersection. But if 2 circle is there, हमें क्या करना है, केवल 2 सर्कल को सेलेक्ट कर लेना है आउट ऑफ 6, और हमें मिलेंगे 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो दिस विल बी नोन एज मैक्सिमम नंबर ऑफ देयर point of intersection. So I hope you get all of this question very greatly. So thank you all very much.